गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यह है रेडियो उड़ान और हाजिर हो चुका है आपका दोस्त आपकी लेकर आपका फेवरेट शो वर्ल्ड टूर। जी हाँ दोस्तों, एक नई टाइमिंग, एक नए अंदाज और एक नई उमंग जोश के साथ हाजिर हो चुका हूँ मैं। देखिए, इससे पहले ये शो ब्रॉडकास्ट होता था मंडे को 7 बजे और अब आज इसकी टाइमिंग चेंज हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, हमारा अगला सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इसी के चलते यहाँ पे हमारी भी टाइमिंग चेंज हो चुकी है और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे लिसनर्स होंगे वो हमें इस टाइम पे भी बर्दाश्त करेंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। वो साइट्स जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जगह दी है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो कोई भी प्रकार की साइट हो, हम सब साइट्स के बारे में बात करते हैं। आज प्रोग्राम में हम एक ऐसी कंट्री में जाएंगे जिसमें आज हम पहली बार जाएंगे और बात करेंगे वहाँ के म्यूज़ियम के बारे में। लेकिन प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एज यूजुअल हम सुनते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा गाना। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर वर्ल्ड टूर मेरे यानी आकिब के साथ। मैं हाजिर होता हूँ इस शॉर्ट म्यूजिकल एड ब्रेक के बाद। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, पूरा पहली नजर, जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई, मजा आ गया।
दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांधला आवाज पाया। ನಮಸ್ಕಾರಂ, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी। नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ। हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश। जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे, जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं वर्ल्ड टूर विद मी, यानी आपका दोस्त आकिब। और आज इस प्रोग्राम में, जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा, कि हम एक म्यूजियम के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उसकी डिटेल्स के बारे में, वहाँ पे क्या क्या है, और सुनाएंगे आपको एक प्यारी सी डॉक्यूमेंट्री उस म्यूजियम के बारे में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हर्मिटेज म्यूजियम, मॉस्को, रशिया। जी हाँ दोस्तों, हर्मिटेज म्यूजियम मॉस्को में लोकेटेड है। सेंट पीटर्सबर्ग, अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो वहाँ पे लोकेटेड है, रशिया में। और आपको याद होगा जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चले गए थे रशिया, तो वो भी इस म्यूजियम में इसको देखने गए थे। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसकी पूरी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटमोलॉजी के बारे में, यानी कि ये जो हर्मिटेज म्यूजियम है, इसको हर्मिटेज म्यूजियम क्यों कहा जाता है। अगर हम हर्मिटेज म्यूजियम की बात करें तो इसका जो नाम है वो एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है, अर्मिट, उससे निकला हुआ एक वर्ड है जिसका मतलब है दोज पीपल हु लिटरली लिव अलोन। तो उसी के नाम पे फिर इसको नाम रखा गया है हर्मिटेज म्यूजियम। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी बिल्डिंग्स के बारे में, जो इस म्यूजियम में बिल्डिंग है और कौन कौन सी बिल्डिंग आज इसमें है उसके बारे में भी बात करेंगे, और पहले कौन कौन सी बिल्डिंग थी उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर बात करें अर्लियर पीरियड की, तो इसमें एक स्मॉल बिल्डिंग हुआ करती थी जो अभी भी इसमें मौजूद है और जिसे नाम दिया जाता था स्मॉल हर्मिटेज। और अगर आज की बात करें तो इसमें हर्मिटेज म्यूजियम में काफ़ी सारे और बिल्डिंग्स हैं, और जिसमें जो इसके पैलेस का एम्बैंकमेंट है और या इसका नेबरहुड है, उसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स लोकेटेड है। अगर बात करें तो ओल्ड हर्मिटेज एक इसमें हर्मिटेज है जिसे लार्ज हर्मिटेज के नाम से भी जाना जाता है। द न्यू हर्मिटेज, द हर्मिटेज
थिएटर एंड द विंटर पैलेस। और ये जो विंटर पैलेस है ये फॉर्मर मेन पैलेस था रशियन स्टार्स का। अगर रीसेंट ईयर्स की बात करें तो ये जो हर्मिटेज है ये एक्सपेंड हुआ है, जनरल स्टाफ बिल्डिंग और पैलेस स्क्वायर बिल्डिंग और मेंशकॉव पैलेस, ये काफी और भी बिल्डिंग्स इसमें इंक्लूडेड की गई है। अब बात करें यहाँ की कलेक्शंस के बारे में। अगर इसकी बात करें कलेक्शन की तो वेस्टर्न यूरोप में है ये लोकेटेड, तो इसमें वेस्टर्न यूरोपियन आर्ट कलेक्शन, यूरोपियन पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड अप्लाइड आर्ट, 13वीं से लेके 20वीं सदी तक जो भी इस रीजन का आर्ट था, कल्चर था, वो सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये सारा कल्चर तकरीबन 120 कमरों में डिस्प्ले किया जाता है, पहली और दूसरी मंजिल पे, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पे। ड्राइंग्स और पेंटिंग्स जो है उनको टेम्पररी एग्जीबिशंस में डिस्प्ले किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो बात करेंगे इजिप्शियन एंटिक्विटीज के बारे में। तो हम बात कर रहे थे इजिप्शियन कलेक्शन के बारे में। तो अगर बात करें उसके बारे में तो 1940s से अगर हम बात करें और डेटिंग बैक टू 1882 1882 तब से लेके अब तक इजिप्शियन कलेक्शन काफी ज्यादा इसमें मौजूद है, जिसमें इंक्लूडेड है कास्टिग्लाइनी कलेक्शन जो काफी पुरानी कलेक्शन मानी जाती है इजिप्शियन की। और इसने इस कलेक्शन ने एक बहुत बड़ा हॉल ऑक्यूपाई किया है ग्राउंड फ्लोर पे इसका, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द विंटर पैलेस में लोकेटेड है। ये एज पैसेज सर्व करता है क्लासिक एंटिक्विटीज तक। तो चलिए अब हम बात करेंगे आगे इसके बारे में, क्लासिकल एंटिक्विटीज के बारे में बात करेंगे। ये जो क्लासिकल एंटिक्विटीज है ये मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग के जो पार्ट है ऑक्यूपाई करती है। और जो इंटीरियर्स इस बिल्डिंग के हैं उनको एक जर्मन आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हुआ है, लियो वन क्लेंजी उनका नाम था। ग्रीक रिवाइवल स्टाइल में इसको उन्होंने डिजाइन किया था। उन्होंने इसको डिजाइन करने के लिए यूज जो किया था वो पेंटेड पॉलिश्ड स्टको एंड कॉलम्स ऑफ नेचुरल मार्बल यूज किया था और ग्रेनाइट भी इसमें यूज किया था। इसमें जो सबसे नोटिसेबल हॉल है इंटीरियर में वो है हॉल फर्स्ट फ्लोर पे जो 20 कॉलम्स में बना है और ये डिवाइडेड किया गया है 3 पार्ट्स में और ग्रे मोनोलिथिक कॉलम्स में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज्वेलरी और डेकोरेटिव आर्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक सुनाते हैं एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री इस म्यूजियम के बारे में, और आपको उस डॉक्यूमेंट्री में इस म्यूजियम के बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप एंजॉय कीजिए इस डॉक्यूमेंट्री को। मैं हाजिर होता हूँ उस डॉक्यूमेंट्री के बाद। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। This is the best time to come here before opening hours to hear all this silence. You can feel that the halls and everything in them are waiting for this day. I was about 3 years old, or maybe less, when I first came to the Hermitage. I remember the impression that everything here is alive, that I'm in a sort of fairy tale, and when I touched the feet of the Atlantes, I felt that they were alive. And all these statues of ancient gods, they seemed alive to me too. Maybe they were just frozen in the moment, but they were still living and probably still working some of their miracles. I'm definitely not qualified to do that, no. Извините, пожалуйста, надо оставить верхней одежды в гардеробе. Где гардероб? Туда. Спасибо. The Hermitage is an international institution, and it's famous worldwide. People are, yes, very jealous that I get to
have this opportunity to see what most of the public wouldn't be able to see. I don't think too many people have ever seen me or even heard of me, but I'm one of the oldest guardians of the Hermitage. Who knows what could have become of the exhibits, if not for me and my friends. Meow. Iona Ballantyne is never late for work. But she isn't an employee here at the Hermitage, or a guide. Iona is a volunteer from England. When we stand in the entrance, we have to tell people when they're passing through to the turnstiles, we have to tell them to take off their outdoor clothing, like their coats and jackets, and put them in the cloakroom, and just answer any general questions that they may have about the museum, about where to find maps or guides or excursions. In London, Iona studies Russian culture. A friend from Russia recommended that she work at the Hermitage in St. Petersburg as an intern. Искусство 20 века. Это на третьем этаже у нас несколько залов. Да, надо найти лестницу на втором этаже. Вы нас могли бы сопроводить? Да, я могу. Откуда вы? Мы из Питера. Петербурга. Хорошо. Iona works here for free. She's one of 150 volunteers. They usher in the visitors, carry boxes, arrange chairs where they're needed to be. Whatever it takes to earn that prestigious title, Hermitage Volunteer. Not everyone is worthy of the honor. About 5 hours is what we expect from people if they really want to become fully fledged volunteers. Then we'll have a museum pass made for them. 5 hours a week is the minimum that's required. If newcomer Oksana can find enough free time, and she passes her probation period, she will also become a volunteer at Russia's Grand Museum. You will be taking part in one of our grand events, the Hermitage Cat Day. Instead of an interview, I was taken by the hand and led to the basement where we're hanging pictures. I have absolutely no idea what we're doing or what it is for, but I see that's all about the cats. Day of Cats in the Hermitage, which happens every year. It's for the cats, but there's lots of cats which lots of people don't realise live actually underneath the Hermitage in order to catch mice primarily, so that they don't, get in the way or damage any of the precious works that they have. She's right. No enemies down here. I've been in the museum basement with my friends for years. Rodents dare not set foot in this place. They can sense danger from afar. Volunteers? Could you help? Felicitas, I think we need to fix this here. You don't need scissors. I'll show you. Okay? So, Oksana, this is how we put our volunteers to work. Whether or not Oksana becomes a volunteer will be Mikhail's decision. He too came to the Hermitage one day to offer his own help. St. Petersburg's 300th anniversary was approaching, and I didn't want to be just an onlooker. In 2002, I came to the Hermitage and offered to organize a group of state Hermitage volunteers. Our task was to find 150 people and select the most active ones who would be able to act in any unexpected situation. You have to remember that on the night of May 27th, when the Hermitage was open all night, it had the highest number of visitors. There were many, many pregnant ladies, because a lot of them hoped to have their child on this very day, because there were special prizes offered, like apartments for babies who were born on St. Petersburg's anniversary. Indeed, a few women did deliver their babies right here in the Hermitage.
So the volunteers had to be ready to do whatever was needed, to react quickly and keep smiling, while helping us to resolve all possible situations. At first, the volunteers were not well received at the museum. Hermitage veterans thought that the new generation wanted to take away their jobs. After only a few years, the staff members became more friendly. Good morning. How are you? Good, thank you. Fine. I'm waiting you for a job, but first of all, please write your names in journal, because we are in storage. It's very important. What is your name? Hermitage. And Francis. Very nice. I'm Daria Hook. I will tell you a little bit about the dendrochronology. Dendrochronology is about comparing the annual rings in trees. Studying them can reveal a lot of information about the state of the environment the tree grew in, and its age. Volunteers Francis and Felicitas have to work out how old these samples are. It's a little bit weird to have this old piece in your hand because it's still wet, and I don't know, it feels like you just put it out of the water, and you can't really realize that it's so old. It just feels like a normal piece of wood, but I feel really a little bit, it's a little bit scary because I don't want to do it wrong and I don't want to destroy it. It's very difficult to cut with this razor because the surface won't show any rings, and it's easier, or it's not easier, but it's more useful to do it with this small razor. So you will find that the rings will show underneath what you cut. Recently, volunteers have begun taking photographs. They also write descriptions of and measure ancient Greek sarcophagi found on the northern Black Sea coast. They've measured the whole sarcophagus, as well as every tiny detail. You can see that the sarcophagi have so many decorative elements on them. Every single decoration needed to be measured and photographed. But what's most important is that each of the names of our volunteers will be mentioned in the academic prospectuses. They'll feature dozens of names of people who've worked on the team here for over a year. All of them were really immersed in this fascinating process. Oksana is going through her own probation period. She'll have to go through all this herself if she succeeds. Her assignment is to help organize a game for the grand event, Cat Day, at the Hermitage. Cats are very important inhabitants at the Winter Palace and the State Hermitage. They've lived in the old Winter Palace since the times of Peter the Great, when he brought the first cats from Holland. Later, his daughter Elizabeth issued a special decree for cats to be bred in what is now modern-day Tatarstan. 50 cats were then brought from Kazan. Since the 1740s, those cats' descendants have lived in the Winter Palace. They've been provided with food in return for keeping the exhibits safe. We are also volunteers of sorts. We work for food. And that's Irina. She's also a volunteer. Irina gives us food and medicine and takes care of us. I don't quite understand why she does it. Can I pet her? Of course. Her name is Safiko. Look, if you pet her here, she's gonna purr. Can you hear? Right here. We're often asked which cat is our favorite. Our favorite is the one that is the saddest, the one who is sick at that moment. We give them all the same love and care. When they get well, we have another favorite who is less happy than the others. Here, little girl, my beauty, let's take a pill. Here's a good girl. Well done. Here we go. We now have 65 cats at the Hermitage. That can sometimes reach 85. There were times when we had 120 cats.
Of course, we try to make sure the number of the animals stays within a certain limit. 70 is the maximum we can afford. If there's more, there'll be trouble. Cats are selfish. They like their own territory. And we don't have mice at all. We have so many cats that the mice just don't show up here. There was a time when the cats were removed from the museum. I don't know what happened, but in a month we lost half the library. Because rats ate everything. They don't care much for the value of an exhibit. Even if it's $1 million, they'll still finish it off. I know, I have a cat at home, and I'm starting to look a bit like a cat. I can meow like a cat, and lie like a cat. My cat Andrushka, he does it like this. The Hermitage is my childhood fairy tale, where my parents would take me. You walk here and forget which century it is. You feel like you're a historical character. I remember when I was a child, I always wanted to walk around in a nice dress, with a big skirt, to wear a hat. Of course, it was my dream to play a part in all this, to help somehow to gain access to the archives. This is a very important event, both for visitors and volunteers. We've been preparing for it all year. It's an incredibly exciting celebration for the kids. Hello. The game begins here. This is the story. Today we're fishing. And this is a map of the Hermitage to help you find your way around. This is where it begins. And this is a clue that you need to get where you need to go. This is a quiz that needs to be answered. If you get the answer to the question right, you go to our person in a room, and then you get another flyer and go to another room. You need to pay attention to these kitties here. Here you go. Of course, many of my friends, my parents, at first asked me why. I said because I like it. It's my hobby. For quite a long time, Mom couldn't get used to me leaving early for the Hermitage and coming home late. Now, she's used to it. The family's gotten used to it. Yeah, she's at the Hermitage. She's at home there, and you can't drag her out of there. Yelena usually comes to the museum before opening time and doesn't leave until the guard closes the main entrance. On the 10th anniversary of the volunteer service, her friends joked that they should give Yelena a camp bed. Then she'd be able to spend the night there as well. I like it. Maybe I would have been a housewife, maybe I'd read a book, maybe watch some TV, but it's not that interesting. It's boring. I get bored very quickly. So I came here. First of all, it's a museum. There's always something interesting happening here. They're children. Today's the Hermitage Cat Day. And the day involves a game. We catch big fish and small fish. The challenge is to find stories devoted to cats and fish. We've set up a few checkpoints in the Hermitage with volunteers posted at them, and that's where you see the guys. All of them taking part in the quest. They find the right picture, the right story or piece of art, they answer the question, and then move along the route. You found a fish. You found one. So go on, read that question, sea life. 2 large fish glittering with scales. It sits on a low table. The third one at the feet of the boy, who is holding a bowl of succulent fruit and a basket of greens. The boy represents one of the summer months. Well done. Next question. Next question. You answered? Well done. I really like the way children solve puzzles. I love helping them. They're having fun. You guessed? Well done.
That's very, very funny. Yeah, I'm interested in the game, and it seems like a great game. It's really getting children involved because they have to identify artifacts, ancient Egyptian artifacts, and they're all getting excited and jumping up and down. And I think, yeah, I'm finding it interesting as well to give them advice and hints and things. And so, this year's reward for all the participants was a trip to the theatre, where a musical performance was specially staged for them. A few years ago, a Portuguese writer worked with the children here in the same way. He had decided to write a book about Russia and came to work at the Hermitage. Back then, volunteers were often bankers who'd gone bust in the crisis, or the children of people who worked in world-famous museums, like Paul Laurent, whose father is the Louvre's director. He didn't mention who he was or where he was from. Like everyone else, he helped everywhere. He helped at conferences, he helped with evening events, he helped if we had to meet guests or something. He helped the department carry boxes, folders, and he always worked with us here. He also taught French here in the department to anyone who wanted. Paul Laurent, along with everyone else, stood and answered visitors' questions for hours on end. Sometimes the most unexpected questions. Some people think that they're at the Russian Museum, and when they're told they're at the Hermitage, they're very surprised. Where's the Russian art? Where's Repin, they say. One time, for example, a young man came up looking around the room. He asked where he was. He was told, "You're in a museum." Then he was still surprised. His second question was, "But which one exactly?" Chinese tourists are an interesting bunch. I've never found anything that they find particularly interesting. They see paintings hanging on the walls as just decorations. The same with floors and ceilings. I even heard of one group of Chinese tourists who turned down a trip to the Hermitage because they said they'd already been to the Louvre. So they already knew what a museum was like. In America, everyone always talks about the Hermitage, the collection of old Renaissance art. That's the most famous stuff that gets talked about in America, and I, of course, wanted to see it. And I also, in America, I study history and reading about the revolution that was in St. Petersburg and that all the stuff that happened here through history. And I got to see that all my first day here, and I've seen that many, many times since I've been working here. One of Raymond's dreams is to join an expedition with archaeologists from the Hermitage. Over the summer, museum staff conduct excavations in Russia's regions and invite everyone to take part. This is our expedition. We've been doing it for 50 years now. Last year we celebrated the 50th anniversary, and I have to say that many monuments have been discovered over those 50 years of excavation. But we can still say that even more sites remain unknown. Usually in the archaeology department, I've done translating work about different archaeological excavations that people have done, that researchers have done, and also I was doing some translating on Renaissance art. That's definitely been the most rewarding work because it's been interesting and it also helped me practice Russians. The archaeology department is, for many volunteers, one of the most interesting places in the museum. Here, you can literally touch history. I come here to draw these ancient objects which are from different things that they found, and I need to document them in this way as a volunteer to help the archaeological department. And you have to be very precise when doing these drawings. It's not like a normal drawing where you might miss out some things. Here you need to, every mark is important for their research.
It's amazing to be to be behind the scenes at the Hermitage and to see the archaeological department, see all of this research which goes on, which I would have no idea that there were so many shelves and shelves of all these different items, which I think most people wouldn't even know about what was going on behind the scenes. Hermitage staff sometimes thank the volunteers by giving them free tours. For example, a tour of the new storage facility in the old village region. A third of what was stored in the museum was once moved there, about 1 million items. The largest being a tent given to Russia's Empress Catherine II by the Ottoman Emperor, Sultan Selim III. There was a visit by the Turkish ambassador to St. Petersburg with diplomatic gifts, and one of those gifts is this tent. It's all around us. It's like we're inside the museum exhibit. This is only a fifth of it. The rest is still rolled up and stored away. The tent is way too large because it covers about 100 square meters. Along with the new storage facility, the Hermitage will soon be offering a museum of modern art. This building is the left wing of the general headquarters built by Carlo Rossi in the early 19th century. Before the revolution, the Ministry of Finance and the Ministry of Foreign Affairs were here. Next year, this grand reconstruction will end and we'll have one of the largest contemporary art museums. In one of the 2 courtyards which have been rebuilt so far, we can already see one of the first exhibits. It's an installation created by the already famous Russian artists Ilya and Emilia Kabakov. They created this immediately after the collapse of the Soviet Union. And this installation, it represents the emergence and growth of the Soviet Union and its collapse. Actually, yes, this isn't just debris left behind. It's part of the installation. We lived through constant construction during communism, so therefore this part probably just represents the continuing construction. There are still many things they haven't seen at the Hermitage, but I think one day they'll catch up and join in other events. Maybe one day you'll pass something. You'll look and think, my God, I did that. I glued these pieces, for example, or painted over that crack over there. It's this involvement with everything that you pass by. You see it and realize that you have something to do with it as well. You're also part of history, you're part of the museum, part of those exhibits. Oksana is now a volunteer at the Hermitage, and Yelena its new employee. After 6 years of selfless support to the museum, she's been offered a job. But even so, Yelena still volunteers. At the end of her working day, she hurries to meet the visitors with a smile. तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे पलक कदमों पे आ झुके हसी लम्हात वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे
जिक्र तेरा फिक्र तेरी हर घड़ी दिल में मेरे पलक कदमों पे आ झुके हंसी लम्हात वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे इश्क की दास्तां जुदा है मेरी तू ही दोनों जहां बाखुदा है मेरी यार मेरे सिर्फ तेरी तिश्नगी लब पे मेरे पलक कदमों पे आ झुके हंसी लम्हात वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे पलक कदमों पे आ झुके हंसी लम्हात वो दे दे तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे मेरा नाम रिया है मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट पेपर मैट ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है मित्र ज्योति जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण प्रशिक्षण स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ मुझे पढ़ना बहुत पसंद है लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625 वेबसाइट www.mitrajyoti.org ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org धन्यवाद। क्या हुआ मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यार क्या करूं दुखी कर दिया है घर वालों ने लड़की ढूंढ शादी कर ले उनको समझ नहीं आता मैं ब्लाइंड हूं कहां से ढूंढूं लड़की जिस भी वेबसाइट पे जाता हूं एक भी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। तो चिंता किस बात की आज ही डाउनलोड करें इनक्लब INCLOV और फुली एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव ऐप जो कर सकता है आपके सपनों को साकार और दिला सकता है आपको आपका मनचाहा लाइफ पार्टनर। इसे आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आज ही लॉग इन करें www.inclub.com और कॉल करें 0124-403-4567। हैप्पी मैच मेकिंग। रेडियो उड़ान आप सुन रहे हैं वर्ल्ड टू वर्ल्ड मेरे यानी आकिब के साथ। और दोस्तों अब आप इस प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं और इस प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम ये कहेंगे कि
ज़्यादा हम अब इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है और जो आपने डॉक्यूमेंट्री सुनी उसकी मदद से आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। अगर इसके ओरिजिन की बात करूँ मैं, सबसे पहले कैथरीन द ग्रेट उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले आर्ट कलेक्शन स्टार्ट की थी 1774 में, और उन्होंने काफ़ी सारी कलेक्शंस यहाँ पे असेंबल की, जिसमें सबसे पहले 317 पेंटिंग्स इसमें थी, जिसमें फ्लेमिश और डच पेंटिंग्स इंक्लूडेड थी, और इसके अलावा और भी ज़्यादा पेंटिंग्स थी जो उस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। इसमें जो कलेक्शन थी उसमें रिब्रांड 13 पेंटिंग्स, रूबन 11, जेकब जोडी 7, एंटनी वेंडिक 5, पल्लव वेरोनीज 5 पेंटिंग्स, फ्रांस हल्स 3 पेंटिंग्स, राफेल 2 पेंटिंग्स, ऑलबीन 2 पेंटिंग्स, किशन 1 पेंटिंग, जॉन स्टेन द आइडल, हेनरी गोल्डियस, डर्कमन बबूरन, हेनरी वैन बेलन एंड जेरिन वैन हैनफोस्ट। इन पेंटर्स ने इसमें जो पेंटिंग्स की थी वो सारी आज भी यहाँ पे मौजूद है। और चलिए बात नहीं कर पाएंगे हम इससे आगे, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ जो जुड़ने के तरीके हैं वो है हमारी स्काइप ID RADIOUDAAN, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.radioudan.com, फेसबुक पेज /ग्रुप www.facebook.com/radioudan, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जो कि है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, जहाँ पे आप सिलेक्टेड शोज़ की वीडियोस देखते हैं जो रेडियो उड़ान के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध शोज़ हैं, बुक वर्ड, वोकैबुलरी डोज, बदलता दौर, और आपका सबसे फेवरेट शो टेक्सिटी। तो चलिए इस उम्मीद और सीखने के साथ कि अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तुम के बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लगती कोई। हाँ इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो, जो देखे गुमसुम हो। देखो ना मैं भी हूँ खोया सा बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवानगी। तुम्ही को मैंने पूछा, तुम्ही को चाह पाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो
जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यार क्या करूं, दुखी कर दिया है घर वालों ने। लड़की ढूंढ, शादी कर ले। उनको समझ नहीं आता मैं ब्लाइंड हूं। कहां से ढूंढूं लड़की? जिस भी वेबसाइट पे जाता हूं, एक भी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। चिंता किस बात की, आज ही डाउनलोड करें इनक्लाब INCLOV, a fully accessible and inclusive app जो कर सकता है आपके सपनों को साकार और दिला सकता है आपको आपका मनचाहा लाइफ पार्टनर। इसे आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आज ही लॉग इन करें www.inclub.com और कॉल करें 0124 403 4567। हैप्पी मैच मेकिंग।